Hello, good afternoon. Very warm welcome to all of you. I am Dr. Zinkal Tilwa. I am a homeopathic consultant. I am practicing in Mumbai since 5 years, more than 5 years. Currently, my clinic is located in Daisar area of Mumbai. I practice online also on from my website. It is www.innatehomeohealing.com. Here when people approaches, I consult them on Skype. I take their entire interview. I check them, their reports, everything, and then accordingly I courier them their medicines on their postal addresses. Here we do address especially children cases more from age 0 onwards to old age with their acute complaints like cold, cough, fever, everything, with their chronic complaints too, even to old age geriatric complaints like chronic all diabetes, sugar, all hypertension, and all chronic complaints. On especially on Mondays, I work for non-profit firms where for those all underprivileged patients, I help them with very minimal charge medicines, minimal charge treatment, the what they cannot afford normally. So then with the with very minimal charge, they get it on Mondays, and that's all about me. Thank you so much to Baby Chapra for giving me this opportunity so that I can reach to all of you, talk to all of you, and attain your all queries. Our today's topic is about immunity, how to boost up, how to build up children's immunity, adults' immunity. Okay, so what is basically immunity? इम्यूनिटी इज लाइक टी. हर एक इंसान को, हर एक लोगों को एक इम्यूनिटी होती है, खुद की रोग प्रतिकारक शक्ति होती है जिससे वो कोई भी डिसीज से खुद से ही फाइट आउट कर सकता है. ये नॉर्मल गिफ्ट होती है जो हर एक इंसान को होती है. सो व्हाट हैपेंस व्हेनेवर एनी डिसीज फैक्टर कम्स, our killer cells, our antibodies increases in the body, and it fights against all the infectious cells in the body, and then it fight it out, and then it removes. Most of the time this works. Like whenever any extra pathogens comes, our antibodies increases and it fight it out. When body cannot fight it out, this is the time when immunity is very low. The body cannot fight it out and it succumbs to all those kind of diseases. So whenever our immunity is weak, we get this kind of frequent infections like cold, cough, especially to kids, right? So usually whenever we get this kind of infections, acute infections, what we do, we usually call for a medicinal help, and usually we take a treatment of allopathy, right? But there are other healthy ways also. We should opt homeopathy, ayurveda, and other modes of treatments are also available, which we can always opt for. So here in brief, I'll tell you the very minute differences between all those modes of treatment, so that in which kind of disease, what kind of treatment we should generally opt for, so that it increases our immunity also. At the same time, it treats those kind of diseases also. I'll give you because you all are non-medicals, I'll give you an example of a tree and explain you. This is a very easy way to understand that this is a tree. It has its own immunity, right? So whenever this tree is exposed to any kind of infectious disease, it gets this kind of infections. Like these are the branches which has got some kind of infections. So most of the time, tree has its own immunity, like how we all do, to fight it out, and it brings like its all normal branches and roots and all. But whenever the infection is very strong, usually
The allopathic way of treatment, where the antibiotics, painkillers, antiviral medicines, injections are given to treat this particular diseased part. And once this part is better, like tree is again better until it gets next infection. But many a time after this antibiotics also, this part of disease is not gets cured. And in this case, the surgical way of treatment comes into picture, where these parts of branches are gets cut. Okay, if those parts are removed, which are diseased part, and under this diseased part, the immunity is not getting boosted. There are other holistic ways of treatments also, like homeopathy and allopathy, Ayurvedic modes of treatments, which works from root. So what happens in homeopathy? For example, the immunity of any being is low. The homeopathy tries to work from the root, come out of whenever the next similar method. So this way, homeopathy. So basically, this is what immunity is all about. I have a few pointers which we should always consider when a child is falling sick again and again. What are the things we should look into it? Number one is, as I told you, always opt for a kind of treatment which not only cure the disease, but it boosts up your immunity also. But don't opt such kind of a treatment which literally suppresses your immunity. For example, what we usually do when we have a fever. Do you know how we get fever? Usually, when there is any infection in the body, our body's defense mechanism, body's fighting mechanism is on an active mode. It fights back with all the infections inside, and the heat is generated during that entire process. So, whatever the heat is generated, it is expressed outwards in the form of temperature, which we usually find in thermometers. So, in this case, if we give anti-inflammatory medicines, so anti-inflammatory will reduces the inflammation, but whenever there's fever, whenever the temperature is there, so the fighting mechanism is on, and we are not supposed to suppress that fighting mechanism. So in that case, whenever we use antibiotics or any anti-inflammatory medicines, what happens exactly is we suppresses our own body's mechanism and allows any external forces to work on, so that we come out of disease. Usually this happens when we take antibiotics. Number one, antibiotics has its own side effects. Usually to kids, those who are very prone to cold and cough, and whenever they take antibiotics, जब भी वो एंटीबायोटिक लेते हैं, बार बार उनको लूज मोशंस, डायरिया जैसे होता है, एनर्जी बिल्कुल लो हो जाती है, वो बार बार उनको खाना अच्छा नहीं लगता, और जब तक एंटायर एंटीबायोटिक का कोर्स खत्म नहीं होता, वो उनकी नॉर्मलसी पे नहीं आ सकते. यूजुअली ये होता है बच्चों के साथ, विच मीन्स दैट एंटीबायोटिक इज वर्किंग ऑन द बॉडी, एट द सेम टाइम उसका खुद का एक साइड इफेक्ट्स भी है जो सप्रेस भी करती है अपनी इम्यूनिटी को. सो ऑल द टाइम दिस एक्सटर्नल हेल्प वी कैन नॉट ऑप्ट फॉर. तो क्या होता है जब ऑल द टाइम हम बाहर से हेल्प लेते हैं, एंटीबायोटिक्स की हेल्प लेते हैं, तो अपनी इम्यूनिटी विल गो मोर वीकर एंड वीकर, विच इज नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन, राइट? एट द सेम टाइम, हाउ होम्योपैथी एड्रेसेस दिस डिजीज, लाइक जब भी होम्योपैथ के पास आप जाते हो, वो कोल्ड कफ जो भी बच्चे को प्रॉब्लम है पूरी जानकारी लेते हैं, उससे बात करते हैं डिटेल में, उनका खाना, उनका पीना, उनका एनर्जी क्या क्या चेंजेस हुआ है, उनके मेंटली क्या क्या चेंजेस हुआ है, फिजिकली क्या क्या चेंजेस हुआ है, ये सारे बेसिस पे होम्योपैथिक मेडिसिन जो देते हैं, जिसका फर्स्ट काम होता है उसकी इम्यूनिटी बूस्टअप करे, और वो इम्यूनिटी डिजीज जो भी प्रोडक्ट्स है बॉडी में, उससे फाइट आउट करती है. सो इसकी वजह से
इम्यूनिटी तो बूस्टअप होती ही है एवरी टाइम जब भी होम्योपैथी ली जाती है, एवरी अक्यूट के साथ, बट वो अक्यूट प्रॉब्लम भी फटाफट हील होता है. एंड देर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग myth that homeopathy doesn't work fast, like it is very slow process, which is actually not. जैसे ही पिल ली जाती है टंग पे, सो फ्रॉम द नर्व रूट इट स्प्रेड्स इन एंटायर बॉडी, और वो within few hours to few within 1 to 2 days, usually the patient comes out of the acute. Most of the time that is what I have seen in my practice, and that is the reason we do be in touch with the patient every 4 hours, 6 hours, ask to them about their kid, that how much is the fever, is he eating better now, is his energy better. So होम्योपैथी से जब भी होम्योपैथी सूट होने लगती है बॉडी को, अपने आप एनर्जी फर्स्ट ऑफ ऑल एनर्जी इंप्रूव होने लगती है, चाइल्ड बिल्कुल एक्टिव हो जाता है, जैसे ही वो नॉर्मल रहता है उसकी एपेटाइट वापस आ जाती है, उसकी थर्स्ट वापस आ जाती है, एंड धीरे 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 फीवर या और जो कोई कंप्लेंट्स है वो रिड्यूस होने लगती है. दिस इज हाउ होम्योपैथी वर्क्स. Yes. So my first point was opt for such a treatment which don't suppress the immunity, but it arouses your immunity. And other pointers which I would suggest you, especially to those kids who are not currently prone to very acute infections, but they still need that kind of boosting in the immunity. So what is the first requirement? Help children to calm down their stress and their anxiety. Every being, every child have their own anxiety, have their own phobia, fear, their own delusion, perceptions. And nowadays, very hectic schedules of stresses of parents, and very hectic schedules of children, they take a toll on them. So what happens with regular schedule of stress increases the higher level of cortisols and adrenalines in adults. In the same way it responds in children also. So these are the hormones which mean to lower down the immunity. So when they are calm, when they are more happy, more cheerful, they'll be more healthy and more immune. What one way we always should look into is, every child has a right to play. Every child should need like 90 minutes, 1.5 hour of playtime, free playtime in their own space, maybe an open space, or maybe in the open area, like if beach is there or a garden is there or a open space is there. But every child should like play for 90 minutes. So this is the one way, whatever they eat, their body is capable to absorb all important micronutrients and vitamins when they are happy and when they are playful. Whenever child that should get exposed to nature, like walk on the natures, walk on the beaches, in the gardens, and they should be more and more exposed to the natural places. This is also one of the way they will be more in touch with themselves. At the same time, they will be more healthy. Number two, which is also important, is they should have a good sleep. Every children should have 10 to 14 hours of sleep daily. What happens, रात को जब भी बच्चा सोता है, स्पेशली इन अ डार्क, और जब भी कोई भी प्रकार की लाइट नहीं होती, the sleep hormone melatonin which increases in the body, and this is considered to increase your immunity also, because sleep is the first healing medications. When you are sick and when you take a proper rest, you usually come out of that, you feel better after taking that rest. So ऐसे ही sleep काम करता है बच्चों के लिए. So at least 10 to 14 hours of sleep is required, maybe a afternoon nap and an entire night nap. And that sleep should be unplugged with all electronic devices. Devices shouldn't be in their room and not close to their bed also. Number 3, जो सब लोगों की क्वेरीज होती है मोस्ट ऑफ द टाइम कि बच्चों को क्या खिलाऊं
जिससे इम्यूनिटी बढ़े, क्या दूं जिससे इम्यूनिटी बढ़े. So diet is also one of the criteria. It is not the only criteria कि जिससे immunity बढ़ती है, but it is also one of the criteria. So ideally बच्चों को वो नेचुरल फूड्स ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्ट करने चाहिए एज अ मदर, एज अ पेरेंट. वैसे नेचुरल जो नेचुरली अवेलेबल होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऑल फ्रूट्स, ऑल green leafy vegetables, all kind of vegetables, sabji, milk products also, then all nuts, raisins, these are naturally available. So apart from the like including the meals also, जब भी उनका स्नैक टाइम्स होता है, so ये सारी नेचुरल चीजें इंक्लूड होनी चाहिए उनके रेगुलर डाइट में. फिर जंक, like junk is something which is not natural, right? Something which is we have prepared it. So ये सारी चीजें भी इम्यूनिटी को लोअर डाउन करती है, स्पेशली क्योंकि उसमें ज़्यादा शुगर्स रहते हैं, कैलोरीज इंक्रीज करते हैं, उसमें प्रिजर्वेटिव्स रहते हैं, उसमें और एडिटिव्स रहते हैं, और ये कहीं ना कहीं इम्यूनिटी को लोअर डाउन करते हैं. सो इफ एट ऑल लाइक बच्चे को बहुत इच्छा हो रही, बहुत मन हो रहा है और बहुत हैबिट है जंक खाने की, तो it should be restricted to twice in a month maximum, not more than that. Twice in a month. It should be a rule in all houses, I believe. And even in the birthday parties and like that, they usually go to all those outlets where like McDonald's and all, where all junks are available. So it should be more, the more parents should approach a home food. They should provide more kind of home food, homely prepared food, and instead of giving all those kind of junks. Then one more thing that the all children should have a microbacteria. They should look into what the curd. Like curd is something which has a helpful microbacteria. It helps to soothe down the flora and fauna of intestines. So what happens, like microbacterium bacilli, which is very helpful bacteria with helpful micronutrients, vitamins. At the same time, all those harmful agents which are coming by the food, though, so this helpful bacteria fights against it and removes out of the body. And this is the side effect of antibiotics also, that kids gets loose motions and diarrhea, through which all those helpful bacteria, microbacterium bacilli, dies and that comes out of the body. So usually with the antibiotics, many pediatrician provides this microbacteria also, like all those enterolites and all those medicines also, which has helpful bacteria. Exercise is something every family should consider it as a part of their routine. What happens when a person is not doing daily exercise? Their killer cells, that it increases, especially WBCs increases, and this helpful killer cells fights against all the pathogens. And it is the same way it responds in children also. So every child is, if doing any kind of exercise, especially Surya Namaskar, which is a chains of stretching, or which helps entire body to stretch it out, it calms and soothes the brain also. So if Surya Namaskar or such simpler exercise, if a child is doing regularly for maybe a 5 to 10 minutes, then he will be really improved on his immunity part. So exercise should be a like part of the routine of the family. If parents are doing, I'm sure child will also follow the same. Then the personal hygiene is also very important to be immune. Like child should always wash their hands before and after having their meal. Their water, what they are drinking, should be hygienic. And these all small things mother should take care of, while to guard against all kind of germ spread. Then passive smoking is something which, passive smoking मतलब कि फैमिली में कोई स्मोक कर रहा है जिसका एक्सपोजर बच्चों को है. पैसिव स्मोकिंग से 4000 जितने टॉक्सिन्स होते हैं, जो हार्मफुल टॉक्सिन्स होते हैं, जो एडल्ट्स को भी
एंड बच्चों को भी हार्म कर सकते हैं। सो क्या होता है कि बच्चों को ज़्यादा हम इसलिए करते हैं, नंबर वन बिकॉज देयर रेस्पिरेटरी रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है कंपेयर टू एडल्ट, एंड नंबर टू उनकी डिफेंसिव मैकेनिज्म इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है कि जिससे वो टॉक्सिन्स को डिसइंफेक्ट कर सके अपनी बॉडी से। सो if it's always better to avoid smoking when for parents, but if they cannot avoid, smoking should be out of the home, should be away from children. Then one more important thing for especially children who are from babies from age 0 to 6 months, breastfeeding from the day 1 to 6 months is very helpful. ब्रेस्ट फीडिंग से क्या होता है, फर्स्ट 3 डेज जो हेल्दी कोलेस्ट्रॉल मिल्क रहता है उसमें हेल्पफुल इम्यूनिटी बूस्टिंग एलिमेंट्स रहते हैं जो एंटायर 6 मंथ बेबी को प्रोटेक्ट करते हैं। और सेकेंड थिंग, ब्रेस्ट फीडिंग में सारे हेल्पफुल न्यूट्रिएंट्स, फैट, सब एंटीऑक्सीडेंट सब उसे मिल जाता है, जिसकी वजह से उसे आउटसाइड फूड की जरूरत नहीं होती। सो 6 मंथ तक बच्चे को अगर बाहर का पानी भी नहीं दिया जाए और सिर्फ रखा तो उसकी इम्यूनिटी बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहती है और वो मेंटेन रहती है फॉर फर्दर लाइफ। वैक्सीनेशन भी एक फैक्टर है जो माना जाता है कि बहुत हेल्पफुल है टू फाइट अगेन ऑल डिजीजेस। बट वैक्सीनेशन मतलब कि लाइव माइक्रोब्स ऑफ दैट पर्टिकुलर डिजीज आर इंजेक्टेड इनसाइड द बॉडी। सो क्या होता है, इट डेवलप्स अ वेरी मिनिमल काइंड ऑफ डिजीज। जैसे वैक्सीन के बाद थोड़ा सा फीवर होता है, थोड़ा इरिटेशन होता है, सो इट डेवलप्स दैट डिजीज, बट इट एट द सेम टाइम इट डेवलप्स दैट इम्यूनिटी अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर डिजीज, जिसकी वजह से हम वैक्सीनेशंस लेते हैं और हमें वो फ्यूचर में वो डिजीजेस नहीं होते हैं। दोज डिजीजेस जो लाइफ थ्रेटनिंग थे, जो अभी बहुत इरेडिकेट भी हो गए हैं और ऑन द वर्ज ऑफ इरेडिकेशन है, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, डिफ्थेरिया, टिटेनस, ये सब के लिए वैक्सीनेशंस आई अग्री बहुत ज़रूरी है, एवरी चाइल्ड शुड ऑप्ट फॉर। बट ऑल दोज वैक्सीन्स जो फ्लू, टाइफॉइड, इन्फ्लुएंजा, ये सब ऐसे वैक्सीन है जिस जो उसकी साइड इफेक्ट्स भी होती है। एवरी वैक्सीन्स आर दे आर लाइक आप पढ़ेंगे वैक्सीनेशन के पेज पे, उस पे जो इंसर्ट रहता है वो आप पढ़ेंगे तो वार्निंग रहेगा कि दिस वैक्सीन कैन कॉज दिस आर दिस साइड इफेक्ट्स। सो अगर आप वो पूरा पढ़ेंगे तो यू विल बी शॉक्ड देयर आर मेनी साइड इफेक्ट्स ऑफ ईच एंड एवरी वैक्सीन। नॉट दैट एवरी चाइल्ड वुड गेट दैट साइड इफेक्ट, बट पॉसिबिलिटी इज देयर। सो व्हाई टू गिव सच वैक्सीन? नंबर वन कि जिसका अभी बच्चे को इन्फेक्शन शायद नहीं भी हो सकता है, तो ऐसी डिजीज, और नंबर टू कि वो डिजीज कम्प्लीटली क्योरेबल है, कोई भी मोड्स ऑफ ट्रीटमेंट से वो क्योर कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल फ्लू, इन्फ्लुएंजा, तो उसके लिए वैक्सीन क्यों ले जिसकी भी अलग एक साइड इफेक्ट्स है। सो ऑलवेज एज अ पेरेंट्स आई वुड सजेस्ट कि आप you think twice before giving vaccinations. You always opt for government schedule और उसमें जो भी वैक्सीन है वो ही दो, और उससे एक्स्ट्रा आई वुड नॉट सजेस्ट टू गिव। यस, एंड देर आर मेनी साइड इफेक्ट्स जिसके लिए होम्योपैथी में बहुत पोटेंशियल रेमेडीज है जो फर्दर लाइक मेडिसिन वैक्सीन लेने के बाद जो साइड इफेक्ट्स होते हैं उसके लिए हेल्प करती है। और मेनी पीडियाट्रिशियन भी है आजकल, जो एक मेडिसिन है थूजा ऑक्सीडेंटालिस 30 पावर, जो देते हैं जस्ट बिफोर वैक्सीन ताकि उसके कोई साइड इफेक्ट्स ना हो। आप आपके पीडियाट्रिशियन को पूछ सकते हैं कोई होम्योपैथिक हेल्प है क्या, या फिर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं उसके लिए, just to avoid any side effects of vaccinations. So these are my all points to increase the immunity. If the parents are happy, if they provide a happy environment to child, if children are happy, I am sure they will be immune to majorly all kind of infections and diseases. Yes, can we go ahead with your questions?
शंकर दास पूछ रहे हैं कि उनका बेबी 1 महीने का है, जॉन्डिस हुआ था, पेट थोड़ा बड़ा दिख रहा है, बहुत जरूरी है पीडियाट्रिशियन का। तो अगर आपको लगता है उसका पेट अभी भी बड़ा है तो आपको पीडियाट्रिशियन को इमीडिएटली कंसल्ट करना चाहिए। और बिगनिंग में जो जॉन्डिस होता है वो हर एक बच्चे को होता है, और बट आफ्टर अ वीक वो फेज पास ऑन हो जाता है, वो जॉन्डिस धीरे धीरे बॉडी से कम हो जाता है। बट अगर वो कंटिन्यू रहा जॉन्डिस तो आपको इमीडिएटली आपके पीडियाट्रिशियन को कंसल्ट करना चाहिए। Alfia is asking, can I give apple puree and a spoonful of orange juice to my 6-month baby on alternate days? Yes, Alfia, 6 months onwards, you can give apple puree, all kinds of fruit purees you can give to your child, and even juices also you can give to your child. But along, it should be on not on alternate days. You may do it every day, but it should be alternate with your breast milk. So when you are giving breast milk, give it after 2 hours. Whatever you want to give, you can give rice khichdi. All those light purees you can start after 6 months to your baby. Pradnya is asking from California that her 5-year-old son is suffering from fever and cold and cough from last 1 month. So number one is, since he's suffering from last 1 month, कोई उसके लिए if at all in California, if it is allowed the medical treatment, so directly you should go to your pediatrician and just check with him how much is the cold, how much is the infection in the body. Yes. Number two, naturally you should start giving him vitamin C contained nutritions, like all the foods which have vitamin C and which is meant to increase immunity. And if at all if he's having fever, and if fever is since 1 month, then I think you should check with his blood reports what kind of fever it is, and accordingly you should go ahead with the treatment. But as I said, for the immunity part, I have given you all the guidelines, and I'll give you about the fruit and in general what are the food intake you should look into to continue maintain their immunity and increase their immunity. If at all any in California, if at all there are any good homeopathic consultants, you should opt them. You should any online treatments if are available, you should opt them. You can call them up and talk to them and take treatment from them too. नेहा पूछ रहे हैं कि रोटा वायरस लगाना जरूरी है क्या, और कितने वैक्सीन जरूरी है? नेहा लखेरा. So hi Neha, basically as I already told you, I would suggest कि जो गवर्नमेंट शेड्यूल्ड कंपलसरी वैक्सीन है वो आपको लेना चाहिए, और जो ऑप्शनल, क्योंकि एज आई टोल्ड यू वैक्सीन की खुद की एक ये होती है, खुद का साइड इफेक्ट्स होता है, और ऑप्शनल ऐसे सारे डिजीज है जिसका ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है. सो यू कैन ऑलवेज ऑप्ट फॉर दोज विच आर कंपलसरी वैक्सीन. हेतल काछड़िया पूछ रहे हैं, मेरी बेटी 2 साल की है, बार बार बीमार हो रही है, कभी सर्दी तो कभी फीवर, क्या करना चाहिए उसके लिए? सो मैंने जैसे ही सारे गाइडलाइंस दिए हैं आपको, उसको एक हेल्दी एनवायरनमेंट देना चाहिए, थोड़ा हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, यू शुड बी हैप्पी ऑल द टाइम. उसको प्ले टाइम थोड़ा आप इंक्रीज करना चाहिए,
1.5 आवर जितना खेलना चाहिए उसको डेली, बिकॉज शी इज 2 year old, तो वो एंटायर टाइम खेलते ही होगी आई एम श्योर। बट उसके साथ उसका जो खाना एंड जो है वो सब हेल्दी रहना चाहिए, आई एम श्योर उसकी इम्यूनिटी और इम्प्रूव हो सकती है। और अगर इसके बाद भी बार बार वो बीमार गिर रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आपको ऐसी ट्रीटमेंट जिससे इम्यूनिटी बूस्टअप होती है वो सिलेक्ट करनी चाहिए, जैसे कि होम्योपैथिक मेडिकेशंस। नेहा इज आस्किंग अगेन कि मेरी 2.3 ईयर की बेटी है, उसका बार बार जल्दी बीमार हो रही है और जिसकी वजह से उसका वेट कम हो गया है। सो उसकी इम्यूनिटी कैसे बढ़ाऊं, खाने में भी बहुत परेशान करती है, प्लीज हेल्प। सो नेहा, वो बार बार गिरने का कारण एज यू नो इम्यूनिटी कम है, और इम्यूनिटी इम्प्रूव करने के लिए मैंने जैसे हेतल को सजेस्ट किया, आपको वो सारे क्राइटेरियाज लुक इनटू करने चाहिए। उसका फूड है, उसकी स्लीप है, उसका डे टू डे रेजिमेंट है जिसमें सब हेल्थ सारी जिसमें हेल्थ मेंटेन होती है, वो सारे क्राइटेरियाज आपको मेंटेन करने चाहिए। एंड फूड में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। आई एम श्योर देयर विल बी मेनी क्वेरीज रिलेटेड टू फूड, सो मैं आपको डिस्क्राइब करती हूँ क्या क्या ऐसे फूड आइटम्स है जिससे अपनी इम्यूनिटी इंक्रीज होती है। विटामिन सी इज कंसिडर्ड टू बी क्लिनिकली प्रूव्ड कि जिससे इम्यूनिटी इंक्रीज होती है। जो अगर बच्चा बीमार है या तो वो बार बार बीमार गिर रहा है तो उसको विटामिन सी का इंटेक ऑलवेज होना चाहिए। सो कौन सी आइटम से फूड आइटम से जिससे विटामिन मिलता है? साइट्रस फ्रूट्स, ऑरेंजेस, स्वीट लाइम्स, lemons, grapes, these are the citrus fruits, और many fruits are there जो sour tasting fruits रहते हैं जिसमें विटामिन सी ज्यादा मात्रा में होता है। और रेड बेल पेपर इज द ओनली वेजिटेबल जिसमें भी which is rich elements of vitamin C and which has beta carotenes also, जो स्किन में और आईज में हेल्प करता है। ब्रोकोली इज ऑल्सो वेरी गुड प्रोडक्ट जो जिसमें विटामिन ए, सी, ई होता है, विच इज कंसिडर्ड टू बूस्ट इम्यूनिटी। जिंजर, which is since ages it is like ginger has a anti-inflammatory properties, so and it helps to fight against all those things। यही एक रीजन है कि जब भी हमें थ्रोट इश्यूज होता है, सोर थ्रोट होता है, तो हम लेमन, जिंजर और हनी साथ में लेते हैं, वो हमें सूद फीलिंग भी कम आउट ऑफ दोस सोर थ्रोट्स वेरी फास्ट। फिर स्पिनाच, spinach also has vitamin C which fights against all those infections, and as I already told you, yogurt, curd, दही जिसमें बहुत हेल्दी माइक्रो बैक्टीरियाज होता है और जो फाइट आउट करते हैं आपकी गट्स को, स्पेशली इंटेस्टाइन को क्लीन रहते हैं। सो एवरी चाइल्ड, हर बच्चे को डेली 1 कप ऑफ कर्ड लेना चाहिए for their healthy digestion to protect them from all harmful bacteria. And almonds is rich in vitamin E. Abhi vitamin E takes backseat of vitamin C, which is again very helpful in immunity. And so daily a handful of almond is advised सारे बच्चों को जो खा सकते हैं, या फिर almond milk also they can take जो बच्चे नहीं खा सकते, प्रोवाइडेड उनको आलमंड एलर्जी नहीं है, और उनको डेली हैंडफुल ऑफ और 10 नट्स डेली लेना चाहिए। और टर्मरिक इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ वेरी हेल्पफुल, सो गर्म पानी में 1 टीस्पून ऑफ टर्मरिक आप दे सकते हैं डेली विथ लेमन एंड हनी, जब बच्चे को बार बार कोल्ड कफ या थ्रोट इन्फेक्शंस होते हैं। Papaya is rich in vitamin C, and it has a peptide enzyme which is it has an anti-inflammatory effects. Apart from it,
It is rich in vitamin K, potassium, folates, and papaya has it is a fibrous fruit. So क्या होता है कि जब बच्चे को कॉन्स्टिपेशन या ऐसे इश्यूज होते हैं, डेली ही शुड हैव सम अमाउंट ऑफ पपैया, कि सॉफ्ट भी होता है वो, और वो खा भी सकते हैं डेली. Kiwi is also rarely available, like it is not something which is grown in India, I think. But it also has all essential nutrients, folates, vitamin K, potassium. So it is also a good fruit, and vitamin C too. Sunflower seeds are also, you can give, like putting it in salads or like that to children if they are falling sick all over again, which is high in B6 and magnesium and vitamin E. So these are the food items, like now and then you can always keep giving to your children, especially उनको जो बार बार बीमार गिरते हैं, तो जिससे वो धीरे धीरे their immunity will be improved. But again I tell you, food is not the only criteria, and I told you many other ways through which immunity is improved. Can I read this? Pooja is asking, is there any homeopathic cure for chronic otitis media and nasal allergy? My 5-year-old daughter is often down with episodes and is put on corticosteroid spray and antibiotics. Please suggest. Yes, Pooja. In those cases where there is an chronic otitis media, जहाँ पे कान में बहुत दर्द होता है, कान में से इंटरनल ईयर में बार बार इन्फेक्शन की वजह से डिस्चार्जेस निकलते हैं, और वो इन्फेक्शंस नोज में स्प्रेड होते हैं. वैसे वैसा इफ नेजल इन्फेक्शन या थ्रोट इन्फेक्शन हुआ तो वो भी अगर ओटाइटिस मीडिया क्रिएट करता है, तो इसके लिए उसकी एंटायर हिस्ट्री ले और ऑप्ट फॉर सच एन होम्योपैथ, जो ये एंटायर हिस्ट्री में उसका नेचर, आपकी बच्ची के साथ बात करें, उसका नेचर, उसका ओवरऑल वेलबींग, उसका ओवरऑल फियर, फोबिया, ड्रीम्स, वो सारे एरियाज को समझ के उसकी जो दवाई दे, वो आई एम श्योर हेल्प करेगी ये सारी कंप्लेंट्स के लिए. आई हैव सीन इन माय प्रैक्टिस मेनी पेशेंट्स ओटाइटिस मीडिया के, ये सब एलर्जीज के, जिसमें होम्योपैथी sounds very helpful. So I'm sure it will help. And the repeated use of corticosteroid spray is not very good. And as I told you already, कि antibiotics suppress करता है immunity को. When it is required in emergency, you can always opt for, but always ask your doctor twice. Doctor, is it really required? What happens many a time, out of all the infections, there are very few infections जो बैक्टीरिया की वजह से होते हैं, बट एज यू नो मोस्ट ऑफ द इन्फेक्शंस वायरस की वजह से होते हैं. जैसे कि वायरल फ्लू, डॉक्टर बोलते हैं वायरल फीवर हुआ, वायरस हुआ. अगर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हुआ तो डॉक्टर बोलते हैं कि वायरल इन्फेक्शन हुआ है. स्किन में थोड़े इन्फेक्शन होते हैं, डॉक्टर बोलते हैं कि वो वायरल इन्फेक्शन है. सो मोस्ट ऑफ द टाइम इन डे टू डे लाइफ we are exposed to more virus than bacteria, and still all the children are more given antibiotics than antivirals. So always ask your doctor twice, is it really required? Then only you do. Next. Okay. So Rupa Ubi is asking how to boost immunity and which type of food increases immunity in children. I have 2 daughters, 4 years, 9 months, and 9 months old. So as I told you, for both the children, like those who are going to school, those who is going to school, थोड़ा फिजिकल हाइजीन मेंटेन करना जरूरी है, उसको प्ले टाइम देना ज्यादा जरूरी है, उसको healthy food, because once kids start knowing about the junk food and outside food in birthday parties and all, सो वो कम डाउन करना बहुत जरूरी है. थोड़ा सनलाइट का एक्सपोजर देना बहुत जरूरी है. सनलाइट में विटामिन डी मिलता है, विच इज ऑल्सो अगेन वेरी हेल्पफुल फॉर इम्यूनिटी. सो वो प्ले टाइम जो भी होता है उस दरमियान अगर सनलाइट मिलती है, या वो वीकेंड के डेज जहाँ पे वो सैटरडे मॉर्निंग, संडे मॉर्निंग को ओपन एरियाज में खेलने को मिलना चाहिए बच्चे को, और ओपन स्पेसेस में ज़्यादा रहना चाहिए बच्चा,
एंड नेचर से ज़्यादा क्लोज रहेगा तो द चाइल्ड विल बी मोर इम्यून टू ऑल काइंड ऑफ इन्फेक्शंस. And the already I have given you all food advices which you can look into. For the 9 month old child, वो बच्चा because he's still on the breastfeeding, so that you should continue till 2 years, if not possible till 1.5 year. और ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ जो भी आप देते हो, फूड देते हो, प्यूरीज देते हो, वो मेक श्योर इट इज homemade food, it is freshly prepared food, not something if cerelac, that also you give homemade. Or you can search on internet, many recipes are available for healthy protein cerelacs. So those are the food items you can give to your 9 month old, so that their immunity increase. Even you travel, that time also you carry your homemade food and fruits, so that they don't fall sick again and again. Can I go to next question? अभी जब भी बच्चा कमलेश राजपूत इज आस्किंग कि बार बार बीमार होने की वजह से हाइट और वजन में फर्क नहीं होता है, और या कुछ सर्टेन एज के हिसाब से वो हाइट एंड वेट नहीं होता है, वो उसमें भी इम्यूनिटी का रोल है. फर्स्ट रोल होता है कॉन्स्टिट्यूशन का. एक बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है जो इनहेरिट होता है फैमिली से, पेरेंट्स से, उस हिसाब से बच्चे के हाइट एंड वेट बढ़ती है. और सेकेंड इन्फ्लुएंस होता है खाने का, कितना हेल्दी न्यूट्रिशंस खा रहा है. अगर बच्चा बार बार बीमार गिर रहा है तो एंटायर बॉडी की एनर्जी उसकी इम्यूनिटी प्रोटेक्ट करने में जाती है, जो जानी चाहिए उसकी हाइट और वेट इम्प्रूव करने में, जिसकी वजह से वो क्राइटेरिया थोड़े लो हो जाते हैं, हाइट वेट इम्प्रूव नहीं होता है. सो अगर इम्यूनिटी इंक्रीज करी जाए तो अपने आप वो बच्चा हाइट एंड वेट भी इंक्रीज हो सकता है उसका. दिव्या पूछ रहे, मेरे बेबी का पेट जल्दी खराब हो जाता है. पेट खराब जल्दी होने के मेनी रीजंस है. बेबी की एज, अगर वो बाहर का खाना खा रही है तो भी हो सकता है. इफ शी इज अ वेरी स्मॉल चाइल्ड और सिर्फ होम फूड खा रही है, बार बार एंटीबायोटिक्स ले रही है, तो वो भी एक रीजन है. वॉर्म्स भी हो सकते हैं. अगर वॉर्म हुआ तो जिसकी वजह से धीरे उनको कॉन्स्टेंट स्टमक एक होता है, और डीवॉर्मिंग आपको मेडिकेशंस देना चाहिए. होम्योपैथी में बहुत अच्छे डीवॉर्मिंग मेडिकेशंस है जो कुछ साइड इफेक्ट्स नहीं करते, एट द सेम टाइम उनको बहुत हेल्प करते हैं. सो डीवॉर्मिंग मेडिकेशंस आप दे सकते हो जिससे उनका पेट जल्दी खराब ना हो. एंड डेली 1 cup of curd you always give, along with all those healthy things which I already told you to give to your child. राजन प्रसाद जी, आपको आपका शेड्यूल है वो चेक करना चाहिए. अगर बेटा 4 years का है, 7 months का है, तो आपको उसका जो गवर्नमेंट शेड्यूल के हिसाब से जो वैक्सीन आता है आपको वो फॉलो करना चाहिए, उसमें देखना चाहिए. ज्योति सोनी, if your daughter is 21 month old, so she is not yet 2. अगर उसको सारे दांत आ गए हैं, खाने में प्रॉब्लम अगर वो क्रिएट कर रही है तो उसका रीजन हो सकता है उसका डेंटिशन चालू है. अभी डेंटिशन एक ऐसा इश्यू है, जब भी बच्चे को दांत आते हैं तो वो भी एक ऐसा फेज होता है जब भी बच्चे की इम्यूनिटी बिल्कुल वल्नरेबल हो जाती है, जिसकी वजह से वो कुछ भी मुंह में डालता है उसका इन्फेक्शन हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल जब टीडिंग आते हैं तो सब चीजें बच्चा मुंह में डालता रहता है, उसके हाथ है, उसके जो भी टॉयज है, तो इसकी वजह से बार बार उसको लूज मोशंस, डायरियास होते हैं, फीवर होते हैं, कोल्ड एंड कफ होते हैं. और इसके साथ साथ अगर बार बार बच्चा बीमार गिर रहा है डेंटिशन की वजह से, तो उसके लिए एक तो वो हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, स्टरिलाइज करके उसके टोज, उसके हैंड्स डिसइंफेक्ट स्टरिलाइज करने चाहिए ऑल द टाइम. इसके साथ फूड आइटम्स में स्पेशली अगर वो उसको क्या पसंद है उस हिसाब से आपको आपका डाइट रेजिमेंट प्रिपेयर करना चाहिए, और वो भी प्रोटीन रिच होना चाहिए, बिकॉज वो एक एज होता है जब भी बच्चे को प्रोटीन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है और कैल्शियम की ज़रूरत होती है. सो कैल्शियम रिच, प्रोटीन रिच फूड होना चाहिए.
सूप आप ऑफर कर सकते हो, और जो भी फूड आप बच्चे को ऑफर कर रहे हो, फॉर 3 consecutive डे सेम फूड आप ऑफर करो। अगर ऑल द 3 days चाइल्ड इज रिजेक्टिंग द सेम फूड, देन कंसिडर कि वो फूड बच्चे को पसंद नहीं है, देन यू ऑप्ट फॉर द नेक्स्ट फूड। बट वो उसका बच्चे का जो मील टाइम है वो एंटायर फैमिली के साथ होना चाहिए, सबके साथ बैठ के खाना चाहिए। और बच्चे का फूड मोस्ट ऑफ द टाइम वो ही होना चाहिए जो फैमिली का फूड है। जिस तरीके से फैमिली भी हेल्दी डाइट फॉलो करने लगेंगे और बच्चे को भी हेल्दी डाइट मिलेगा। इन रही बात डेंटिशनल इश्यूज की, तो डेंटिशनल इश्यूज के लिए उसको मेनी अ टाइम एक्सटर्नल हेल्प लगती है, एक्सटर्नल मेडिकेशंस की हेल्प लगती है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी नेचुरली बहुत डाउन हो जाती है। सो होम्योपैथी हैज प्रूव्ड वेरी हेल्पफुल इन ऑल काइंड ऑफ डेंटिशनल इश्यूज। बच्चे को अगर बहुत लूज मोशंस हो रहा है, ग्रीनिश डायरिया हो रहा है, स्टमक बार बार खराब हो रहा है, हेड बहुत गर्म हो रहा है, फीवरिश हो रहा है, कोल्ड कफ हो रहा है, ये सारी चीज़ों में होम्योपैथी बहुत हेल्प करता है बच्चों को। और इसके साथ होम्योपैथी जब भी बच्चा लेता है, उसकी इम्यूनिटी भी इम्प्रूव होती है, और सारे जो माइलस्टोन होते हैं वो सूद डाउन होते हैं, वो थोड़े फास्ट भी होते हैं। एट द सेम टाइम बच्चा जो इरिटेबल हुआ है, मेंटली बहुत डिस्टर्ब हुआ है, क्रैंकी होता है, बहुत स्टबर्न हो जाते हैं बच्चे, खाने पीने में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ये सारी चीज़ों में होम्योपैथी बहुत सूद डाउन करता है वो फेस को। आई हैव ऑलवेज ऑप्ट फॉर माई 2 year old सर, मैंने हमेशा होम्योपैथी ही दिया है उसके डेंटिशन के दरमियान। सोनल सोनार पूछ रही है, मेरा बच्चा ऊपर का दूध नहीं पीता है तो क्या करना चाहिए? सी, ऊपर का दूध नहीं पीता है, सो दैट इज कम्प्लीटली ऑल राइट। मुझे जानना होगा आपके बच्चे की उम्र क्या है। अगर वो 1.5 साल 2 साल तक का है, मदर्स मिल्क अगर उसे पसंद है तो आप दे सकते हो। बाहर का मिल्क पसंद नहीं है, दैट इज कम्प्लीटली ऑल राइट। वो कोई कंपल्सरी फूड नहीं है, क्योंकि नाउअडेज जो मिल्क अवेलेबल रहता है वो बहुत एडल्ट्रेट रहता है, और उससे भी सेंसिटिविटी बच्चों की बढ़ सकती है, स्टमक इश्यूज भी बढ़ सकती है। एट द सेम टाइम वो जो अमाउंट ऑफ कैल्शियम होना चाहिए, वो जो अमाउंट ऑफ हेल्दी न्यूट्रिएंट्स जो मिल्क में मिलते हैं, वो आप दूसरे फूड से भी दे सकते हैं, लाइक बनाना है, आलमंड है, डेट्स है, जिसमें कैल्शियम मिलता है। सो बिल्कुल जबरदस्ती किए बिना, इफ इज नॉट ऑप्टिंग फॉर मिल्क, यू कैन ऑलवेज ऑप्ट फॉर अदर फूड आइटम्स, एंड यू कैन ऑलवेज इग्नोर अगर बच्चे को दूध पसंद नहीं है। We should always respect to children's their cravings, their desires, and what they like and what they don't like. अगर if they are not liking certain amount of food, हमें उसको respect करना चाहिए, और हमें बिल्कुल force नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो forceful food से कुछ help नहीं होता, और proper absorption भी वो food का नहीं होता है। कामिनी इज आस्किंग, मेरा बेटा 6 years का है, थोड़ा सा भी खेलता है इधर उधर तो उसको खांसी आती है, और लगातार लगातार खांसी आती है, क्या करूं? अगर वो खेलने के बाद खांसी आती, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग कि वो खांसी का इन्फेक्शन होता है, जो कफ आता है वो आता है, कि वो बार बार दौड़ने में, खेलने में खांसी आती है। अगर वो खेलते खेलते खांसी करता है, सो इट इज नॉट समथिंग यू शुड वरी अबाउट, बिकॉज वो मेनी अ टाइम अपना थ्रोट पैसेज ड्राई हो जाने की वजह से वो नॉर्मल रिफ्लेक्ट होता है, जिसकी वजह से खांसी आती है। और अगर खेलने के बाद, स्पेशली एक्सटर्नल एक्सपोजर के बाद उसको खांसी आती है, तो उसको उसकी इम्यूनिटी जैसे बढ़े वैसे कुछ आपको करना चाहिए, बट उसका खेलना स्टॉप नहीं होना चाहिए, उसकी इम्यूनिटी पे वर्क होना चाहिए। नो, not at all. Neha is asking, does banana causes cough? Banana does not cause cough, क्योंकि वो एक फ्रूट है, जैसे हर एक हेल्दी फ्रूट्स रहते हैं। पॉसिबिलिटी है कोई कोई बच्चों को अगर बनाना
कोई अलग फ्लेवर के साथ मिक्स करके बनाना, प्यूरीज या ऐसे दिया जाता है, तो अगर उनको कफ है तो वो इरिटेंट हो सकता है, बढ़ सकता है, but it cannot induce cough. Most of the time it doesn't induce the cough. I haven't seen any case where banana has induced cough. ओके, श्वेता कुमार इज आस्किंग, 4 साल की बच्ची है उनकी और कोई भी गंदा क्लोथ चबाने लगती है, क्या करूँ? पॉसिबिलिटी है अभी भी आपकी 4 साल की बच्ची को कोई दांत आ रहे हैं, या जिसकी वजह से उनको दांत की वजह से ईचिंग हो रहा है और जिसकी वजह से वो गंदा क्लोथ चबाने लगती है। क्योंकि वो 4 साल की है, यू कैन ऑलवेज टॉक टू हर, यू कैन ऑलवेज मेक हर अंडरस्टैंड दे कि उसकी गंदा कपड़ा चबाने से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। नंबर 2, अगर उसको बहुत ईचिंग आ रहा है और कोई भी बाकी के टीथ जो डिलेड डेंटिशन उसका हो रहा है आ रहा है, तो उसको आपको डेटॉल में या वॉश किए हुआ क्लियर और सन ड्राइड किया हुआ कुछ ऐसा कपड़ा देना चाहिए जिससे उसका ईचिंग भी कम हो और वो चबा सके, और वो आफ्टर 1 or 2 आवर आपको वॉश करने को डालना चाहिए। ओके, दिस आतिफ अहमद इज आस्किंग कि बेटी 3 महीना 20 डेज की है, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ऐसा ऑलरेडी इन द बिगनिंग सेशन आपको बताया है कि क्या क्या करना चाहिए। Okay. 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 So this is my last answer. I am attending this last question. कि 3 साल की है, आई हैव ऑलरेडी given you some pointers कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। हेल्दी रूटीन मेंटेन करना चाहिए, हेल्दी एक्सरसाइज, अभी वो बहुत छोटी है, 6 years ऑनवर्ड्स वो एक्सरसाइज कर सकती है, तभी एक्सरसाइज के लिए आप सारा एक्सपोजर्स दे सकते हैं। और खान पान के लिए मैंने आपको 10 to 12 आइटम्स आप बताई है, स्पेशली विटामिन सी युक्त जो भी प्रोडक्ट्स है, साइट्रस फ्रूट्स एंड जो सारी चीजें हैं वो आपको देनी चाहिए। और अगर बार बार बीमार गिर रही है तो ऐसी ट्रीटमेंट आपको करनी चाहिए जिससे उसकी इम्यूनिटी डेवलप्ड हो। ओके, सो हियर आई वुड कंक्लूड दैट फूड्स सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं है कि जिसकी वजह से हम इम्यूनिटी इंक्रीज कर सके बच्चों की। देयर आर सो मेनी थिंग्स एज but when any kind of treatment, always opt for such a treatment which is holistic. Holistic meaning something जो उसके entire being को affect करे, उसकी immunity को improve करे, नहीं कि something जो उसके particular disease part को suppress करे और उसकी immunity को suppress करे। Especially as I told you, homeopathy which does, जितने भी बार बच्चे हमारे पास आते हैं कोल्ड एंड कफ को लेके, every time whenever they come out of cold and cough only with homeopathy, especially fever में भी वो homeopathy से बाहर निकलते हैं। उनकी frequency and intensity of getting into this cold and cough, falling sick again and again बहुत कम हो जाती है। You can always talk to those parents whose kids are taking homeopathy and ask them how their immunity has increased after taking homeopathy. It really helps. And स्पेशली अक्यूट्स, ऑलवेज ये मिथ रहा है कि होम्योपैथी अक्यूट्स के लिए बहुत स्लो एक्ट करती है, विच इज टोटली रॉन्ग। विद इन फ्यू आवर्स टू विद इन अ डे और 2, कितना भी फीवर है, कितना भी कोल्ड कफ है, वो धीरे 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 सबसाइड हो जाता है। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, होम्योपैथी नर्व्स के थ्रू एब्जॉर्ब होती है और स्प्रेड होती है एंटायर बॉडी में, एंड इट इज वेरी किड्स फ्रेंडली ओनली। एक बार बच्चा होम्योपैथी लेता है वो सामने से मांगता रहता है, बिकॉज दोज आर द टाइनी स्मॉल पिल्स। सो होम्योपैथी इज वेरी किड फ्रेंडली ऑल्सो, एंड फॉर ऑल काइंड ऑफ अक्यूट्स जो कितनी भी सिवियर है, यू कैन ऑलवेज speak to your consultant, you can always speak to your homeopaths and ask them about all those treatments. Okay, and when a person opts for homeopathy, ओवरऑल चेंज आता है उसके एंटायर बीइंग में।
ओवरऑल चेंज आता है उसके एंटायर पर्सनालिटी में, क्योंकि होम्योपैथ कंसिडर करता है उसका जो ड्रीम है, फियर्स है, फोबियास है, उसको जो डर बहुत लगते हैं और जिसकी वजह से वो बीमार हो जाते हैं, ऐसी सारी सिचुएशंस जो मेंटली अराइज हुई है, ऐसी सारी सिचुएशंस में आपको होम्योपैथी में बहुत फायदे दिख सकते हैं। और मैंने बहुत देखा है ऐसे केसेस में कि जब when one person is immune after taking homeopathy, when they come out of their all acute infections, और वो जो भी हेल्दी ट्रैक पे जाता है, मेरी ऑलवेज एडवाइस रहती है कि मैं उनको कोई ऐसी एक्टिविटी जो उनके हार्ट के क्लोज है, जो एंजॉय करते हैं, ऐसे मैं ऑलवेज उनको एडवाइस करती हूँ टू कंटिन्यू ऑन अ डेली बेसिस। क्या होता है इससे, एक तो वो हेल्दी रहता है, हैप्पी रहता है, एट द सेम टाइम दे रिमेन क्लोज टू देयर सेंटर, वो उनके सेंटर से क्लोज रहते हैं, जिससे वो ज़्यादा इम्यून रहते हैं। इन ऑलवेज दे बेटर एक्सप्रेस देमसेल्फ कि उनको क्या होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट इम्यूनिटी। अगर और भी क्वेश्चंस है आपको या और कोई क्वेश्चंस है, आई विल ट्राई टू रिप्लाई on the comments if possible. But if more inquiries if you want to know more about homeopathy, and especially my way of how I work with homeopathy in this kind of low immunity cases, so you can always go to my website, which is www.innatehomeohealing.com. And if you have more queries, you can contact me on my Gmail, which is innatehomeohealing@gmail.com. Thank you so much, and it's always nice to talking to you.